Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Vygotsky's Socio-Cultural Cognitive Development Theory with special reference to scaffolding. Dear students, as we already know that Vygotsky has given the concept of social constructivism. Social constructivism is that discourse of knowledge which believes knowledge is the result of social and cultural influences. It means knowledge is created or developed with the result of experiences, and individual receives the experiences from the environment. I mean to say you from both natural and social environment. Dear students, as we have already discussed the major principles of Vygotsky's socio-cultural cognitive development theory, in today's lecture, we will focus on one of the major key crux of the theory, which is known as scaffolding. Dear students, scaffolding is one of the important concepts which is given by a Russian-born psychologist who died very young age at the age of 37 years. I mean to say you Lee Vygotsky. Now, what is scaffolding? The term scaffolding, coined in 1970 by American psychologist Jerome Bruner. It simply means to provide the support or help to the individual in order to complete the task. For example, the teacher and others support the learner in order to complete the task so that they will reach next level or stage. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, keeping in view the concept of scaffolding, it is one of the important concepts of social constructivism. The term is given by one of the eminent American-born psychologists, namely Jerome Bruner. यहाँ पर अधिकतर हम गलतियां कर बैठते हैं, especially जो learners competitive exams के लिए जाते हैं, वो scaffolding को always Vygotsky के नाम से जानते हैं. अदरवाइज जो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है ये 1970 में जेरोम ब्रूनर ने दिया है. Appropriate and most relevant answer is Jerome Bruner. Then later on, the Vygotsky has used the term scaffolding. Now, dear students, what is scaffolding? Keeping in view the term scaffolding, it simply means temporary help given to the learner or any individual in order to perform the task. जब हम एक इंडिविजुअल को हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर ले, तो इस मैकेनिज्म या प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं. Who will provide the temporary help? Question arises here. Who will provide temporary help? यानी कि कौन हेल्प कर सकता है एक इंडिविजुअल को या लर्नर को. Dear students, help is provided by more knowledgeable person. यानी कि वो person who is knowledgeable, I mean to say you competent, skillful person is known as more knowledgeable person. More knowledgeable person provide help करता है less knowledgeable person को ताकि वो अपने टास्क को आराम के साथ परफॉर्म कर ले. Whenever the individual has to perform the task, the more knowledgeable person has to, by and large, support to the person. And that support which is given to the person is known as scaffolding.
यानी कि task performance is based on the process of scaffolding. जब तक कि एक टीचर सपोर्ट नहीं करेगा लर्नर को, तब तक एक लर्नर टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकेगा. Same is the case with other fields. Support is not needed only by the learner. Apart from the teaching learning process, in every discourse of knowledge, the individuals felt the need of support. चाहे हम गेम की बात करेंगे, गेम में कोच होता है और कोच सपोर्ट करता है प्लेयर्स को हाउ टू परफॉर्म द टास्क. Apart from game, there are other fields as well. चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, हर एक फील्ड में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो टीम डॉक्टरी अप्रोच में ऑलवेज जो कॉम्पिटेंट मोर नॉलेजेबल डॉक्टर्स होते हैं वो बिगनर्स को ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं इन ऑर्डर टू perform the tasks related to the medicine, in order to treat the patients effectively. How to treat the patients? The competent professional doctors are providing the support to the beginners. So this support which is given by more knowledgeable person to the less knowledgeable person, this is known as scaffolding. And who are the more knowledgeable person? When we will look through the prism of, I mean to say you, social constructivism, especially the portion which is discussed by Vygotsky in his one of the eminent theory which is known as socio-cultural cognitive development theory. Teacher is more knowledgeable person who provides support to the learners. Coach is the knowledgeable person who helps to the players to sharpen their skills. Apart from it, there are other more knowledgeable persons. I mean to say you competent persons who is having mastery of learning और वो दूसरों को support करते हैं. And biggest example is peers or adults. Apart from peers and adults, parents are also included in the category of more knowledgeable persons. क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को तरबियत देते हैं, हेल्प करते हैं in order to learn the language, in order to develop the skill competency, in order to learn the basic habits. And parents plays important role to develop the various basic habits among their children. So we can say that parents are more knowledgeable persons. Nutshell में हम कह सकते हैं scaffolding is that process in which temporary help is given to the individual in order to perform the task. Otherwise, we can't perform the task without providing the support. Especially जब टास्क का नेचर कॉम्प्लेक्स होगा तो उस वक्त बहुत मुश्किल होता है एक लर्नर को कि कठिन टास्क को परफॉर्म कर लेना. जब भी नेचर ऑफ टास्क डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स होगा तो उस वक्त एक नोवेस को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हेल्प के ज़रिए उस टास्क को परफॉर्म कर सके. अपार्ट फ्रॉम इट, डियर स्टूडेंट्स, help is necessary needed to the learner या इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड taught, in which teacher tries to help the learner in order to achieve the goals or aims and objectives. टीचर का बुनियादी मकसद होता है कि लर्नर को हर एक लेवल में मदद करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने हेल्प की बच्चे को एडिशन सीखने में तो बच्चे ने मास्टरी हासिल की एडिशन में.
Now, in order to reach to the next level, student also needed the help. Now, अब बच्चे को subtraction सीखना है. Subtraction सीखने के लिए या subtraction में mastery हासिल करने के लिए एक लर्नर को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. अब जब टीचर ने सब्ट्रैक्शन में भी बच्चे को सपोर्ट दे दिया और टीचर के सपोर्ट से बच्चे ने कंप्लीट सब्ट्रैक्शन सीखी, द चाइल्ड और लर्नर हैज कंप्लीटली गॉट द मास्टरी और रिसीव्ड द मास्टरी इन सब्ट्रैक्शन. अब बच्चे को थर्ड लेवल पे लेना है. आई मीन टू से यू लर्नर हैज टू नाउ रीच टू द थर्ड लेवल, कि अब लर्नर को डिवाइड सीखना है. यानी कि एक के बाद दूसरी लेवल तक पहुंचने के लिए एक लर्नर को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. एंड अपार्ट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल, जहां पर हर एक लेवल पे पहुंचने के लिए इंडिविजुअल को हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो हेल्प के जरिए दूसरी लेवल तक पहुंचता है. दूसरी लेवल को क्रॉस करने के बाद उसे तीसरी लेवल तक जाना है, तीसरी लेवल के बाद चौथी लेवल तक जाना है, सो दैट कंप्लीट परफेक्शन विल टेक प्लेस. डियर स्टूडेंट्स, scaffolding also refers to a method where a teachers offer a particular kind of support to students as they learn and develop new concept or skill. In scaffolding, the teacher then gradually steps back and let students practice on their own. Finally, students by and large work individually. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्कैफोल्डिंग में एक टीचर बच्चे को हेल्प करता है ताकि वो अपनी टास्क को परफॉर्म कर सके. एंड विद द हेल्प which is provided to the learner, the basic purpose of scaffolding is development of skill competency or perfection in the child. Dear students, scaffolding का बेसिक पर्पस है कि बच्चे में स्किल कंपिटेंसी डेवलप होनी चाहिए, बच्चे में कंप्लीट परफेक्शन आनी चाहिए. इसीलिए टीचर या और कोई नॉलेजेबल पर्सन एक इंडिविजुअल को सपोर्ट देता है. बिकॉज मेन मोटिव एंड पर्पस इज दैट स्किल कंपिटेंसी और टू अटेन द मास्टरी हासिल करने के लिए एक इंडिविजुअल को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. इसीलिए एक इंडिविजुअल को सपोर्ट दिया जाता है ताकि उसमें कंप्लीट परफेक्शन आ जाए, ताकि वो कंप्लीटली उस टास्क को परफॉर्म कर पाए. So that is why support is given to the individual. Now in scaffolding, when the teacher or any other person gives to the support to the individual or any learner, तो उसके बाद सपोर्ट धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाता है. यानी कि टीचर एलिमिनेट्स द सपोर्ट, वो सपोर्ट को वापस लेता है. Now what is the purpose? कि पहले हेल्प दी जाती है लर्नर को ताकि वो टास्क को परफॉर्म कर ले, फिर उसके बाद उस सपोर्ट को बाहर निकाला जाता है, सपोर्ट नहीं दिया जाता है. आई मीन टू से यू सपोर्ट उसके बाद नहीं दिया जाता है ताकि जो लर्नर है वो इस टास्क को इंडिविजुअली परफॉर्म कर सके, सो दैट वी विल कम टू नो वेदर द लर्नर हैज अटेन्ड द मास्टरी और नॉट. जब एक लर्नर एक टास्क को सपोर्ट के बगैर परफॉर्म कर पाता है, सो वी कैन से दैट स्किल कंपिटेंसी और मास्टरी हैज डेवलप्ड इन द लर्नर और एनी इंडिविजुअल. इसीलिए सपोर्ट को फिर नहीं दिया जाता है सो फार एज स्कैफोल्डिंग इज कंसर्न. Scaffolding does not mean that always we will give the support or help to the individual. It is not anyway scaffolding. Scaffolding में पहले सपोर्ट दिया जाता है, फिर उसी सपोर्ट को वापस लिया जाता है ताकि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, ताकि बच्चा जो है हम देख सके कि वो इंडिपेंडेंटली इस टास्क को परफॉर्म कर पाता है कि नहीं. At the beginning of the scaffolding process, the teacher provides a lot of support. That support is then removed in stages, step by step,
This process imparts confidence and builds skill competency. Dear students, keeping in view the mechanism of scaffolding, अगर हम अब स्कैफोल्डिंग को डीपली देखेंगे, स्कैफोल्डिंग में पहले लॉट ऑफ हेल्प दिया जाता है बच्चे को टास्क परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसे नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है कि इस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है. इन बिगिनिंग द टीचर गिव्स लॉट ऑफ सपोर्ट टू द लर्नर in order to perform the task. For example, task may be to learn addition. Addition सीखने के लिए, subtraction सीखने के लिए, divide सीखने के लिए, या other knowledge जो mathematics के related है. अब यहाँ पर सवाल mathematics ही का नहीं है, बल्कि और subjects भी है, चाहे वो social science subject है, language subject है, या any other discourse है. पहले टीचर यानी कि कंप्लीट सपोर्ट देता है, लॉट ऑफ सपोर्ट लर्नर को देता है, क्योंकि बिगिनिंग में एक लर्नर के पास नॉलेज नहीं होती है, नो हाउ नहीं होता है कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है. दैट इज व्हाई टीचर गिव्स लॉट ऑफ सपोर्ट और हेल्प टू द लर्नर. लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता टीचर इस सपोर्ट को रिमूव करता है स्टेज वाइज. ग्रेजुअली सपोर्ट इज डिक्रीज्ड. क्यों सपोर्ट को डिक्रीज किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है? इसलिए ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी या स्किल कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो जाएगी कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर. नाउ वी विल फोकस ऑन सर्टेन की एग्जाम्पल्स. की एग्जाम्पल्स विल डिस्क्राइब कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है, हाउ वी विल प्रोवाइड द सपोर्ट टू द लेस नॉलेजेबल पर्सन. किस तरीके से एक इंडिविजुअल को हमें सपोर्ट देना चाहिए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल फोकस हियर सर्टेन एग्जाम्पल्स so that we will come to know about how support is given to the individual. For example, it may be learner. Number 1, teacher helps the students to break the lesson into small units or chunks. अगर टीचर को सपोर्ट देना है या हेल्प देनी है बच्चों को ताकि बच्चे जो है वो अपने लेसन को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सके, तो टीचर को कंप्लीट लेसन बच्चों को नहीं देना चाहिए, होल लेसन नहीं देना चाहिए, क्योंकि होल लेसन बच्चों के लिए एक कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाएगा. तो कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉलर बनाने के लिए लेसन को डिवाइड करना है स्मॉल यूनिट्स में या स्मॉल चंक्स में. जब बच्चे को हम स्मॉल चंक्स या यूनिट्स में कोई भी टास्क देंगे तो वो आराम के साथ सीख सकता है कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क, एंड आहिस्ता आहिस्ता से बच्चे में कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ जाएगा. व्हेन द चाइल्ड और द लर्नर विल लर्न हाउ टू परफॉर्म होल ऑफ द टास्क. हमें बच्चे को आई मीन टू से यू लेटर्स सिखाने हैं. आवर टारगेट शुड बी नॉट दैट वी विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द लर्नर फ्रॉम लेटर ए टू द जेड. No, it is better to only give the concept or knowledge about the letter first, that is A. और उसके बाद हम उसे दूसरी टास्क देंगे B. उसके बाद हम लेटर C उसे देंगे, उसके बाद D, so on and so forth. Same is the case in terms of mathematics. If we have to teach the mathematics to the learners, तो हम complex टास्क नहीं दे सकते हैं या होल टास्क बच्चे को नहीं दे सकते हैं. यानी कि पहले हम न्यूमेरिकल्स बच्चे को सिखाएंगे, उसके बाद एडिशन सिखाएंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, उसके बाद डिवाइड सिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से कि बच्चे में एक परफेक्शन आ जाएगी. फिर वो आराम के साथ मैथमेटिक्स की कोई भी एक्सरसाइज खुद कर सकता है. नंबर 2, टॉकिंग स्टूडेंट्स हाउ टू परफॉर्म द टास्क व्हाइल कंप्लीटिंग इट. Dear students, keeping in view the second step, अब दूसरी तरीके से हम किस तरीके से मदद प्रोवाइड कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को.
अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, जब एक बच्चा टास्क परफॉर्म करता है तो उस वक्त कम्युनिकेशन करनी चाहिए एक टीचर को, बातें करनी चाहिए टीचर को कि किस तरीके से इस काम को आप अंजाम दोगे। इट मीन्स टॉकिंग व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क, और टॉकिंग के जरिए हम उन्हें समझा सकते हैं कि आप किस तरीके से इस काम को अंजाम दोगे। यानी कि लर्नर्स खुद टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो टीचर है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, वो उन्हें कहता है उस वक्त वर्बली बाय स्पोकन फॉर्म कि इस काम को किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से आप इस सेटअप को हल कर सकते हो या परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज द सेकंड setup which is involved in the, I mean to say you, in the process of scaffolding. Third, grouping students together and support each other while performing the task. Now scaffolding, I mean to say you, help किस तरीके से दिया जाता है। Keeping in view the concept of scaffolding, तो बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए। जब हम बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हम ग्रुप में उन्हें एक कॉमन टास्क प्रोवाइड करेंगे। When we will give the common task to the group of the students and they will help to each other in order to perform the task, and automatically transfer of learning will take place. वो कोलैबोरेटिव वे में या कोऑपरेटिव वे में वो उस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे, and it will help to the all learners to get the mastery in the टास्क, किस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क। दैट इज व्हाई सो फार एज स्कैफोल्डिंग इज कंसर्न, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक कॉमन टास्क दी जाती है और वो मिलजुल के उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये भी एक वे है, स्ट्रेटजी है, हाउ टू हेल्प टू द लर्नर्स टू परफॉर्म द टास्क। नंबर फोर्थ, referring the task to the models or experts where the students can gather additional information. Dear students, fourth strategy which we have to adopt in order to perform the task, हमें टास्क को रेफर करना चाहिए मॉडल के पास या एक्सपर्ट के पास। मॉडल और एक्सपर्ट इज दैट पर्सन who is having the in-depth knowledge or expertise in the concerned field. इसीलिए जब हमें टास्क को परफॉर्म करना नहीं आता है तब हमें उस टास्क को एक्सपर्ट के पास भेजना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट को कंप्लीट नॉलेज होती है कि इस टास्क को किस तरीके से किया जाता है, और वो सिर्फ मैकेनिज्म ही नहीं बताता है कि हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है कि किस तरीके से आप इसे परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए सो फार एज स्कैफोल्डिंग concept is concerned, scaffolding believes that role of the mentor, role of the model, हम मॉडल के रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मोर नॉलेजेबल पर्सन ऑलवेज हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि उनमें एक्सपर्टाइज होता है, मास्टरी ऑफ लर्निंग होती है, और मास्टरी ऑफ लर्निंग हासिल करने के लिए हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है, उनकी सजेशंस की जरूरत है, उनकी डायरेक्शन की जरूरत है। जब तक कि वो डायरेक्शंस नहीं देंगे तब तक हम टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, हम खुद में यानी कि कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं कर सकेंगे। इसीलिए देयर इज अ वे, व्हेनेवर देयर इज द टास्क, ट्राई टू डिस्पैच द टास्क टू द मॉडल एंड विल गेट द एक्सपर्टाइज ओपिनियन। नंबर फिफ्थ, गिव स्टूडेंट hints, tips, cues, tricks while performing the task. Dear students, keeping in view the Vygotsky's socio-cultural cognitive development theory, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो एक टास्क को परफॉर्म कर पाता है ऑन द बेस ऑफ सपोर्ट, ऑन द बेस ऑफ हेल्प। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर व्हेन देयर इज ए मैटर ऑफ लर्निंग ऑफ द लर्नर। अगर बच्चे को लर्न करना है तो किस तरीके से हम बच्चे से लर्न करवाएंगे। टीचर को जरूरी है कि बच्चे को हिंट दे ताकि वो हिंट के जरिए समझे कि इस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है।
किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द हिंट्स, द टीचर शुड गिव द टिप्स, ट्रिक्स, यानी कि ट्रिक्स फॉलो करने से भी हम डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म कर पाते हैं। सो दीज वेर द वेरियस स्ट्रेटजीज which the teacher has to adopt in order to support to the learner so that skill, competency and perfection will take place in the learner. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.